Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hello friends, today we will discuss the another concept of educational psychology, that is personality, and in this class we discuss the three part of that concept, that is meaning of personality, nature of personality and the determinants of personality. So let's start our class with the meaning of personality. To arrive at its meaning, we have to trace the historical root of the word. तो आमे जदि मीनिंग को जाउचंती हिस्टोरिकल रूट द इटमोलॉजिकल मीनिंग को आमे टिके डिफाइन करिवा वर्डली मीनिंग को आमे डिफाइन करिवा आउ ताको आमे जदि देखिबा दैट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना ओके एंड दैट वाज एसोसिएटेड विथ द ग्रीक थिएटर्स इन एंशिएंट टाइम एट दैट इन एंशिएंट टाइम जो ग्रीक थिएटर्स थिला जोठी विभिन्न एक्टर्स माने परफॉर्म करथले डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रे तो सेही कांसेप्ट को नेकी पर्सोना वर्ड आस्थिला और सेही वर्ड रो पर्सनालिटी आसी तो द मीनिंग को जदि जीवा तो पर्सना रो मीनिंग रहउची द मास्क ओर्न बाय द एक्टर्स वाज कॉल्ड पर्सोना जो मास्क पिंदुथले जो एक्टर माने एक्टिंग कला बेले विभिन्न विभिन्न वे रे जो से माने परफॉर्मेंस दउथले तो से डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस पय जो प्रकार से माने मास्क पिंदुथले that mask is known as persona. According to the concept of mask, personality was taught to be the effect and influence which the individual wearing the mask left in the audience. तो आमे जदि जनकर पर्सनालिटी को जानिया पय चाहुचंती तो आमे ताकू देखिबा ता संगे किस दिन मिसिबा से केम तार बिहेवियर कोन अछि ई सब कथा को आमे जदि क्लियरली आइडेंटिफाई करि परछन देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड the personality of that particular individual. So personality सही concept कहूची जे गोटे individual से निजो को जो audience आगे जो represent करूची जो हिसाब रे जो way रे represent करूची that concept is known as personality. So here are some definitions given by different psychologists. The first one is, according to Watson, personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable informations. So reliable information आस्तुवा दरकार ता माने चेंजिंग हो नथुबो जो कथाटा को आमे reliable बोली कहि परिबा एठी. So if we want to know about personality of an individual, then we can observe that individual for a long period of time. आमे बहुत समय धरि कि ताकू जते बेले ऑब्जर्व करिबा तो after observations we conclude some concepts about that particular individual and these concepts are known as that individual's personality. So according to R.S. Woodworth, personality is the quality of the individual's total behavior. जो गोटे इंडिविजुअल जो टोटल बिहेवियर रोची सी टोटल बिहेवियर जो क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ एन इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर दैट क्वालिटेटिव अप्रोच इज नोन एज पर्सनालिटी. गोटे इंडिविजुअल जो वे रे तार लाइफ टाकू जो क्वालिटी को मेंटेन करूची ता लाइफ रे दैट क्वालिटेटिव अप्रोच इज नोन एज दैट इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी. एंड अकॉर्डिंग टू अल्फोर्ड, पर्सनालिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द इंडिविजुअल of those psychological system that determines his unique adjustment to his environment. Okay, so every individuals have their own unique adjustment capabilities. किए केमिति कोन जगह रे adjustment केमिति होची, that is unique for every individuals. That uniqueness to adapting or to adjusting in a particular environment, that unique adjustment capacity is known as personality. So according to R.B. Kettle, personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. So Kettle define kale gote particular situation le gote individual ko prakar tar approach rochi, what type of approach should be shown by that particular individual in particular environment. That means ame situation को nei ki am life रे ame सेही अनुसारे आम निजको इंटरप्रिट करू सेही अनुसारे आम निजको जो रिप्रेजेंट करू अन्य मानक आगे. दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज पर्सनालिटी. फॉर एग्जांपल आम जो देखिबा आमे आम सांग मानक सहित जते बेले मिसुचंती कथा होउचंती एट दैट टाइम
our nature, our attitude is very free, okay, because we are trying to mix with our friends. तो जेतबेले फ्रेंड्स सहित हम मिसिबा हमर अप्रोच हम लाइफ रे बा हम बिहेवियर डिफरेंट होबो. बट आमे जेतबेले गोटे एल्डर पर्सन्स हम फैमिली मेंबर्स होंतु बापा माँ बा गुरुजन लोक माने जो माने अछन तांको सहित जेतबेले मिसुचंती कथा होउचंती, we cannot talk them like our friends. आमे आम सांग मानक सहित जमी कथा होउचंती सेमानक सहित हम कथा हेई परिबेन. सो सिचुएशन को नै कि आमे जो हिसाब रे हम निजो को रिप्रेजेंट करूचंती, that concept is known as personality. Hygienic, according to hygienic, personality is the more or less stable or enduring organization of a person's characters, temperament, intellect and physique. तो hygienic define कले personality को विभिन्न aspect को नहीं कि जेमिति कि तार personal characters, तार character केमिति रहउची, ता temperament, the intellect जोटा कि हमर ब्रेन फंक्शंस हमें कहि परिबा, द फिजिक, द फिजिकल स्टैंडर्ड को हमें भी देखि परिबा. गुड गुड फिजिकल जो कंडीशन लोक को हमें कहि परंती जे दैट पर्सन हैव ए गुड फिजिक, सो इट मस्ट हैव ए गुड पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी को फिजिक रे भी हमें रिप्रेजेंट करि परंती. सो इन पर्सनालिटी वी हैव डिफरेंट पार्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द पर्सनालिटी और टू नो the concept of personality of an individual, which determine his unique adjustment to the environment. Okay, so these things, person's character, temperament, intellect and physique, these are helper of an individual to adjust in different environment. That is the concept of personality according to Hygienic. So here are some important definitions. You must carefully understand or try to understand the concept of personality according to these definitions, and also memorize the definitions for your future examination. Okay, let's come to the next part of that concept, that is nature of personality. आमे जो personality देखुचन ता nature टा कोन केमिति. Okay, the personality is something unique and specific. जेमिति कि आमे आगु just discussion करि गेसलु, every individuals have their own personality. मोर personality गोटे प्रकार, आउ जनकर personality आउ गोटे प्रकार, आउ जनकर personality आउ गोटे प्रकार, because we have or different type of differences. आम physical condition रे differences अछि, आम mental ability रो differences अछि, आम thinking process रो differences अछि, आम emotional process रो differences अछि. So we found different conditions, psychological conditions in different persons. Due to that, here the first and the most important nature of personality, that is unique and specific. No two individual behave in precisely the same way over any period of time. हाँ, किछि समय पर्यंत आमे एका भलिया जो एटीट्यूड रो लोक बा पर्सनालिटी रो लोक किछि समय तांको जो पर्सनालिटी को एका भलिया मेंटेन करि पारंती. बट उडे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर्यंत आमे जदि जज करिबा से जिंसटा केबे आमे पाइबा नाही. तो जोटा कि आमे देखुतबा जो गुडे बिग बॉस जो सीरियल गुडे जो सीरियल तो ताको कहजिबनी गुडे रियलिटी शो जोटा हुए होउची. तो सेतरे आमे देखंती जो लोक माने सेठी की जानती तांकर इमेज बा तांकर पर्सनालिटी डिफरेंट थाए. सेठी गला परे तांकर ओन पर्सनालिटी को से माने शो अप करांती. तो सेही अनुसार विभिन्न प्रकार रो जो तांकू जहा भी हुए तो सेमानकर एक्चुअली तांकर एक्चुअल पर्सनालिटी कोन ताकू सेठी जज करी होबो. तो डिफरेंट जगह रे तांकर पर्सनालिटी को डिफरेंट थिला, एठी आसिला परे गुड पर्सनालिटी को डिफरेंट हे गेला. तो गुडे आउ देखिबो से जो गुडे बिग बॉस रो जो गुडे सीजन हुए गुडे लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम पई सेटा हुए. कहीं ना गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड भितर ही जनकर पर्सनालिटी को आमे जज करि परिबा. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ओके, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. जी जेते सेल्फ कॉन्शियस तार पर्सनालिटी को से सेते भलो भाबरे तयारी करि परिबो. मु रियलाइज कली जे मु मोर जो मु को भलिया हेले मते लोक एडमिट करिवे, को भलिया हेले मते लोक एप्रिशिएट करिवे, से अनुसार मु निजुको चेंज करी बा से अनुसार मो निजु को मो पर्सनालिटी को मु शो अप करेबी. तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस. फर्स्ट वी आइडेंटिफाई आवर कैपेसिटीज, आवर इंटरेस्ट, आवर एबिलिटीज. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स वी कैन शो आवर पर्सनालिटी टू द ऑडियंस और टू द अदर इंडिविजुअल्स. द मैन इज डिस्क्राइब्ड एज ए पर्सन्स और टू हैव ए पर्सनालिटी व्हेन द आइडिया ऑफ सेल्फ एंटर्स इनटू हिज कॉन्शियसनेस. बुझिउची कथरा कोन
तो गोटे पर्सन जितेबाला आम जन को पर्सन भाई आइडेंटिफाई करूँ छोट पिला पर्सन हिसाब से आइडेंटिफाई करती केतेबेले आइडेंटिफाई करती जितेबाला सी निजक निजे बुझे आ से अनुसार सी तार पर्सनालीटी को शो अप कराए तो गोटे पर्सनालीटी शो है आम पर्सन बोली कहती तो यही कनसेप्ट को आम पर्सनालीटी बोली बा सेल्फ कॉन्शियस जिते पर्यंत आम भितर न आसी आम आमर पर्सनालीटी को शो अप करि परिबा नाही and personality includes everything about a person it includes all the behavior pattern cognitive जोटा psychomotor cognitive mental activities and affective the concept of heart जोटा कि हम हार्ट रु जो कथाटा को आणु ओके तो ए सब कथा को नहीं जो बिहेवियर पैटर्न हमर आसे तो सेही कॉन्सेप्ट को हम पर्सनालिटी बोली कहू जेमिति हम गोटे छोट एग्जांपल टे नबा माने काहा को गोटे एमिति जो करी कहू ना गोटे पिकुलियरली कहूची जेमिति कि हम देखिबा आमर एठी धर जो बालेश्वर भद्रक बा मयूरभंज आम जो छुआ पिला माने जो अछंती मो पाखरे स्टूडेंट माने तो ए जगह रे तांकर एटीट्यूड बा तांकर अप्रोच डिफरेंट थाए से माने जतबे आउ टिके जो अलग सिटी गले बड़ टाउन को बा बड़ सिटी को जाई जतबे पाठ पाठ पढ़ले तांकर पर्सनालिटी चेंज हो जाए तांकर वे ऑफ टॉकिंग तांकर एबिलिटी तांकर थिंकिंग डिफरेंट हो जाए ये गोटे पिकुलियर मैनर रे गोटे एग्जांपल मु देली बट एक्चुअली जदी हम गोटे एग्जांपल को देखिबा आउ टिके माने क्लियरली तुम बुझी परिबो जेमिति कि गोटे लेस लर्नड इंडिविजुअल आ गोटे मोर लर्नड इंडिविजुअल ओके तांको भितर तुम डिफरेंसेस पाइबो मु गोटे खाली कॉग्निटिव अप्रोच को नेकी मु चिंता कथा कहूची तो गोटे लोक 10th पास आउट आ गोटे लोक पीएचडी करछि सिंपल कांसेप्ट को जिबा गोटे पिलाटे 10th पास आउट अछि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जो एमए की एमएससी करछि एमए और एमएससी ओके ओके तो एई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन भितर किछि डिफरेंसेस रहिबो ना रहिबोनी ऑब्वियसली रहिबो बिकॉज दोज हु आर मोर लर्नड ओके दे शुड एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट इन ए वास्ट मैनर से माने एक्सप्लोर करछन ना एनवायरनमेंट को से माने एक्सप्लोर करछन और जे जते एक्सप्लोर करथिबो ता एनवायरनमेंट को से सेते नॉलेजेबल बा तार सेही बलिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट हितिबो मु कम पाठ पढिछि बा मु जमारू 10th भी पास आउट हेई नाही तो मु गां रे अछि घर पाखरे अछि हायर स्टडीज करी नहीं बाहर दुनिया देखी नहीं तो ऑब्वियसली मो पर्सनालिटी से हिसाब रे चेंज होबो माने मु कहू नाही जे खराब भलो से कथा मु डिस्कशन करू नाही बट पर्सनालिटी कथा जते बेला आसीबो सेते बेला हमें देखिबा जे हमें जते निजु को एक्सप्लोर करिबा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होबो माने हमको एक्सप्लोर करिया पई पड़िबो तमे 10th पास आउट हेले गां रे रहिबो +2 +3 कले तमे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर्यंत आसीबो एक्सप्लोर करलो निजर ऑटोमेटिकली तम पर्सनालिटी डेवलपमेंट होबो सिमिलरली एमए एमएससी बा हायर स्टडीज ता आगु गले तमे आउ टिके बड़ टाउन को जीवो तो सेठी आहुरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होबो तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट रो कथाटा सेटा ये जो बिहेवियर पैटर्न ऊपर डिपेंड करे आ जोटा कि रिलेट करे काहाकू ना कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव and also covers not only conscious activities but also deeper into the semi conscious and unconscious also तो semi conscious और unconscious level पर्यंत पर्सनालिटी पळाए बेले बेले हमर पर्सनालिटी आमे जते कॉन्शियस थाउ बेले बेले हमर पर्सनालिटी अनकॉन्शियसली भी शो हो जाए ओके तो सेही जो कांसेप्ट को आमे देखू तो पर्सनालिटी बोली आमे कहबा जेमिति कि मु छोटो एग्जांपल देबी आमे बालेश्वर लोक तो हमर वे ऑफ टॉकिंग जो प्रोसेस ऑफ जो अप्रोच कथबार्ता रे निश्चित भाव में डिफर करिवो अलगा डिस्ट्रिक्ट लोक सहित ओके तो जमिति कि आमे देखिबा आम भाषाटा बाहरी जीवो एमिति बेले बेले हुए आमर वे ऑफ टॉकिंग टा जते आमे रखिले भी बेले बेले कोन हुए ना सेटा आपे आपे बाहरी जाए ई जो बाहरी जीवा कथाटा दैट इज अनकॉन्शियस सेमी कॉन्शियस लेवल आमे से जिंसटा हुए आमे कॉन्शियसली आमे गोटे जगह रे अछंती तो से जगह आमे आम रीजन लोकल लैंग्वेज को यूज करि परिबानी कंडीशन अछि से जगह से सिस्टम रे अछंती कारण अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लोक पिला माने आछंती बा लोक माने आछंती तो हमकु से जिंसटा को बाहर करिवार नथिला किंतु अनकॉन्शियसली आमे से जिंसटा बाहर जाए बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड ओके तो तमे पर्सनालिटी को गोटे प्रकार शो करिया पई चाहुतलो बट जेहेतु आमे हैबिचुएटेड अछंती अनकॉन्शियसली बा सेमी कॉन्शियस लेवल ले भी हमरो बेले बेले से कथाटा पर्सनालिटी शो अप हो जाए and it is an organization of some physiological psychological system or some behavior characteristics and functions as a unified whole okay
तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कथा को साइकोफिजियोलॉजिकल कथाटा कहूँ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मु दुईटा सारा जो जोड़ी कहली साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोथ माइंड एंड बॉडी ओके तो यार कंबाइंड फंक्शन रे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुए बोली तार नेचर रे से कहूँ ओके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस इन एन यूनिफाइड होल ओके टोटाल मैनर रे जेतेबेले आमे बोथ माइंड और बॉडी को सिमिलर वे रे माइंड गोटे कथा कहूथबो बॉडी गोटे कथा कहूथबो तो पर्सनालिटी प्रॉपर्ली आमे शो करि परिबेनी सो जेतेबेले कलेक्टिव अप्रोच रे बोथ माइंड और बॉडी फंक्शनेट करिवो एट दैट टाइम वी फाउंड ए ग्रेट पर्सनालिटी the next one is personality is not static it is dynamic that means changing over a period of time okay ever in process of change and modification okay change होउची कहार modify होउची तो आमे जते बेले प्लस 2 करूचंती बा प्लस 3 पढुचंती धर जो बालेश्वर एफएम रे जणे आमे प्लस 3 पढले तो जो भले पर्सनालिटी रहिबो तमे जते बेले धर जो आफ्टर ग्रेजुएशन तमे पीजीटे कलो तमे कोठी की ना बाणी विहार को उत्कल यूनिवर्सिटी तो से जगह पर्सनालिटी निश्चित भाव में एठी जो भाया पर्सनालिटी तुमर थिला सेठी गला पर निश्चित भाव में चेंज हो ए जो पर्सनालिटी ताले कोन हला आइदर चेंज हो टोटाली किछि पिलांगर टोटाल चेंज हे जे आ किछि पिलांगर मॉडिफिकेशन हुए तो आमे बोथ कांसेप्ट को एटी कंसीडर करिवा सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डायनामिज्म सो पर्सनालिटी इज नॉट स्टैटिक इट इज डायनामिक वन हैज टू स्ट्रगल विथ द एनवायरनमेंट एज वेल एज इनर फोर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ हिज लाइफ द एनवायरनमेंट रहिबो द इनर फोर्स रहिबो ए सब कथा पर्सनालिटी को टाइम टू टाइम रे चेंज करूथबो एंड एवरी पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट ओके तो जो पर्सनालिटी टा प्रथम कथा मन रखिबा दैट इज ए प्रोडक्ट पर्सनालिटी इज ए प्रोडक्ट एंड से प्रोडक्ट टा कोठु आछी ना हेरिडिटी रो भी आछुंदी आ एनवायरनमेंट रो भी आछी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर रेस्पोंसिबल फॉर डेवलपिंग ए पर्सनालिटी and both contribute significantly towards the development of the child's personality. Learning and acquisition of experience contribute towards growth and development of personality. Learning and acquisition of experience, okay, contribute towards growth and the development of personality. जो personality रो growth और development होउची that is due to learning and acquisition of experience. हमें जते experienced होबा हम भीतर personality रो सेमिति development होबो. Every personality is the end product of the process of learning and acquisition. Indeed, this short and concise explanation in term has a wide meaning. It draws a beautiful portrait of an individual's totally. Okay, तो personality जो concept रहउची सिए उटे individual रो whole portrait को सिए तैयारी कर दो चित्रटा को आंकी दो. It may be understood to mean as the sum total of one's way to behaving towards oneself and others as well as okay निजो को निजो सहित केमिति बिहेव करूची आ अलग लोक सहित बिहेव करूची एई कथा को जदि हम जज करिबा देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी it also predicts one's nature of behavior and how one will behave in a particular situation and one's pattern of adjustment to the ever changing force of environment okay तो पर्टिकुलर सिचुएशन ले पर्टिकुलर पैटर्न ले गोटे इंडिविजुअल केमिति एडजस्ट करूची सेटा ता पर्सनालिटी ऊपर डिपेंड करे सो दीज आर द बेसिक नेचर्स ऑफ पर्सनालिटी आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द कांसेप्ट द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ पर्सनालिटी आ जहार जहा प्रॉब्लम रहिला कमेंट बॉक्स रे लिखि परिबो मु चेष्टा करिवि ताकू कमेंट बॉक्स रे हो बा अलगा वीडियो करिकि बुझिबा पय ठीक अछि द नेक्स्ट कम टू द पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी ओके तो डिटरमिनेंट्स कौन देखिबा पर्सनालिटी डेवलप्स डज नॉट टेक्स प्लेस इन वैक्यूम एमिति पर्सनालिटी डेवलप हुएनी समथिंग which are present in our surrounding which are responsible for the development or deterioration हो बा development हो of personality so several factors within the individual and outside of him within the individual or outside of him निज भितरे आ बाहरे विभिन्न प्रकार कथा अछि those who are responsible for the providing a shape to his personality we can classify these factors into two groups that is biological and sociocultural ओके तो आमे एई दीटा कांसेप्ट बेस रे डिफरेंट डिटरमिनेंट्स को आमे बुझिबा द फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर तो बायोलॉजिकल फैक्टर जेमिति फिगर रे तमे देखि परथुबो
जे ब्रेन अच्छी, लिवर अच्छी, पैनक्रियाज अच्छी, गोनाड्स अच्छी. Okay, so different organs are there in our body, those who are responsible for the development of personality. से जो lower order को जाऊ बा higher order को जाऊ से यही सब जिनस मध्य great influence पकाए आम personality development रे. तो आम देखिबा कोन कोन कथा अछि. The first one is the ductless glands, जोठु आमे hormone secrete हुए. The secret hormones and their secretions is responsible for growth and change in the personality. ये जो hormone रो secret होउची, secretion होउची, that secretion is very responsible for the growth and the change in personality. If the secretes in a normal way, it results in normal growth of the personality. Their over secretions and under secretions causes various kinds of personality deformities. जदि ओवर सिक्रेशन हला और अंडर सिक्रेशन हला विभिन्न जो हार्मोन ग्लैंड्स रहुची से ग्लैंड्स रु जो हार्मोन सिक्रेट हुए से हार्मोन जदि ओवर सिक्रेट हला बा अंडर सिक्रेट हला तो सही जगह रे पर्सनालिटी रो डिफॉर्मिटीज हमें पाइबा. तो कौन कौन ग्लैंड्स सब हमें देखिबा डक्लेट्स ग्लैंड्स गुडा. तो फर्स्ट वन इज पैनक्रियाज. ये सब कथा जो माने साइंस पढुतो बा जो माने भी माने जो कहबो जे प्लस 2 हमें साइंस पढी नांती पैनक्रियाज कथा हमें स्कूल लेवल ले भी पढी छथि. तो पैनक्रियाज इट सेंड्स इंसुलिन टू द बॉडी. When there is a deficiency of insulin, the mental power, ये जो इंसुलिन सुनिथिबो समस्त वर्ड डायबिटीज हेले डायबिटिक पेशेंट माने से माने इंसुलिन नियंती जो ब्लड रो जो शुगर लेवल को मैनेज करिया पई. तो ए इंसुलिन रो यूज कोन माने हम लाइफ रे बा हम जो बॉडी कोन करे ना. द मेंटल पावर आर वीकेंड एंड द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल सीम्स टू लेस बैलेंस. जदि इंसुलिन प्रॉपर्ली जो सीक्रेट न होउची पैनक्रियाज रु तो डेफिशिएंसी जदि हला एट दैट टाइम वी फाउंड जो इंडिविजुअल्स रो तार माइंड मेंटल पावर ओके तार थिंकिंग एबिलिटी तार मेमोराइजिंग पावर ए सब जिंसो कमी कमी जीवो. ओके the person's mood is changed and temperament becomes irritated. Okay, तो जो मानकर पर्सनालिटी जो मानकर इंसुलिन रो प्रॉब्लम थिबो तो से इंडिविजुअल मानकर हम कोन पाइबा ना मूड चेंज पाइबा जो जो हम कहि पारे फ्रीक्वेंट मैनर रे एंड आल्सो टेम्परामेंट इज इरिटेटेड. ओके, तांकर जो टेम्परामेंट ता थिबो सेटा भी इरिटेटेड होबो बेले बेले. ओके, then thyroid, it produce thyroxine hormone. Okay, thyroid produce thyroxine hormone. It maintains the rate of body metabolism. तो body metabolism that is the process okay जो थिरे हमरो जो फूड बा जो हमें लिक्विड जो सॉलिड फॉर्म रे हो बा लिक्विड फॉर्म रे हो बा वाटर ए जो सब जिंस हमें इंटेक करूचंती जो प्रोसेस रे कोन हुए ना सेथरु एनर्जी बाहरे दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. तो यही कथाटा जदि एक्सेसिव सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड वेरियस डिस्टोरेशंस ऑफ द पर्सनालिटी दैट इज रैपिड फिजिकल ग्रोथ बेले बेले हुए बहुत ओवरवेट हो जाती ग्रोथ बहुत हो जाए ऑटोमेटिकली तांको भितर टेंशन आसीबो इरिटेशंस आसीबो इनस्टेबिलिटी आसीबो. तो गुड गुड पर्सनालिटी वाला लोक कोन होसी इट्स इनएडिक्वेट सिक्रेशंस प्रोड्यूस ड्वार्फनेस बांग्रा होबो डलनेस आसीबो ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिटार्डेशंस ऑफ द बॉडीली ग्रोथ. ग्रोथ बॉडी रो जो डिफरेंट ऑर्गन्स बा पार्ट रो जो ग्रोथ होउची टाइम टू टाइम बा गुटे एज पर्यंत तार रिटार्डेशन भी आसीबार संभावना अछि. इंटेलिजेंस डलनेस आसीबो ऑफ इंटेलिजेंस ए सब प्रॉब्लम बोथ माइंड बॉडी बोथ रे आमे पाइबा इफ थायरॉक्सिन हार्मोन मोर आउ लेस दीटा सारा जदी होबो आउ जदी ठीक ठाक रहउची देन वी कैन फाउंड एन नॉर्मल पर्सनालिटी. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज adrenal. It produces two hormones that is adrenaline and cortisol. Okay, तो ये सब कथा मैं साइंस रे पढ़िथिबा गुरु. The excess of adrenaline produces rapid heartbeat and high blood pressure, and it under secretions result weakness and lethargy in the body. तो जदि बहुत हे गला adrenaline ताने हार्टबीट बढ़िबो और हाई ब्लड प्रेशर रहिबो दैट इज हार्मफुल फॉर द इंडिविजुअल. आ जदि अंडर सिक्रेशंस हबो ताहले तार वीकनेस रहिबो आ लेथर्जी हे जिवो ता बॉडीटा. द एक्सेस ऑफ कोर्टिन रिजल्ट्स द exaggerated muscularity. दैट मीन्स जो मसल आम बॉडी रे अछि ता सेटा माने रैपिड ग्रोथ तार होबा स्टार्ट होबो.
A boy of 3 or 4 years age may be shown a physical and sexual maturity of 18 years old. Okay, तो सही जो cortex रो जो जदि excessive हैला तले ये हो less हेले under जो आमे development बोली कहि परिबा तो एमिति problem create हुए तो normal रहिले adrenal gland रो जो hormones बाहरे adrenaline हो बा cortin हो तो जदि normal रहिला then गोटे normal personality रो development हेइ परिबो. Then the next one is gonads. The exert great influence on the sexual life of an individual. If they are overactive, they will make individual oversexed. Okay. And on the other hand, if they are underactive, the sex urges become weak. Over hele oversexed hobo, under hele sex urges are become weak. तो এই ভলিয়া যদি gonads जो hormones आसुची sexual hormone সেই तरह যদি प्रॉब्लम माने जो डिफरेंट चेंजेस आसे जो हमरो टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स आमे ना सुनी चंदी सब तो सेही सब गोनाड्स रु ही सिक्रेट हुए आ ओवर अंडर हेले कोन हुए प्रॉब्लम आमे जानि चंदी. देन द नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड. इट आल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स आल्सो. इट ओवर एक्टिविटी रिजल्ट्स इन जायंटलेस और मस्कुलर फिगर. ओके, जायंटेस एंड मस्कुलर फिगर माने जो आम कहि परिबा जो राक्षस भलिया हो जिवा बड़ माने जो हमर विभिन्न जो ऑर्गन्स अछि तार ओवर डेवलपमेंट हो जिवो. एंड अंडर एक्टिविटी रिजल्ट्स इन इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड स्लगशियसनेस. ओके, तो जेमिति कि ओवर हेले ओवर होबो अंडर हेले अंडर होबो. नॉर्मल रहिबो जदि पिट्यूटरी ग्लैंड्स रो जो हार्मोन्स आसुची बा सीए जहा को ट्रिगर करूची जो हार्मोन्स मानकु सिक्रेट करिया पे ट्रिगर करूची যদি নরমাল রহিলা দেন অটোমেটিক্যালি উই ফাউন্ড এন নরমাল পার্সোনালিটি পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়াল. ওকে, সো দিজ আর দ্য আমি পর্যন্ত যাহা ডিসকশন কলু দিজ আর দ্য ডকলেস গ্ল্যান্ডস. এন্ড দ্য নেক্সট ওয়ান অফ biological process that is physic. It refers to one's height, weight, physical features, body build proportions etc. हाइट हो वेट हो फिजिकल फीचर्स हो आम बॉडी स्ट्रक्चर केमिति हेची आम प्रोपोर्शन बॉडी रो ठीक जगह ठीक अछि कि नाही ये सब जिंस भी पर्सनालिटी रो गुड इफेक्ट पकाए. द फैक्टर्स अफेक्ट वन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड अदर्स. पर्सन्स विथ फेयर कॉम्प्लेक्शंस एंड रिलेटिवली थिन स्ट्रक्चर्स एंजॉय एन एडवांटेजेस ओवर देयर अग्ली एंड बल्की एसोसिएट्स. जो सांग मान को भितरे से एडवांटेजेस नहीं जाए जो माने कि अग्ली थांती बा बल्कि एसोसिएट्स थांती सेमान को पाखरु सेमान कोठु जो माने फेयर कॉम्प्लेक्शन रे थांती आउ रिलेटिवली थिन स्ट्रक्चर जो मान कर थाए से माने एडवांटेजेस नहीं जानती. टॉल पर्सन्स एंजॉय एन एडवांटेजेस ओवर शॉर्ट वन निश्चित भाव रे. ड्वार्फ एंड बल्कि पर्सन्स मोटा जो माने बहुत मोटा मोटा माने बहुत मोटा जो माने मे बी डेवलप ए फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी. पर्सन्स विथ अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस इज लाइक by others. Yes, obviously जो जहार जो लोकर attractive physical appearance थिबो ताको समस्त लाइक करिवे and they like to associate with him. It helps to create a feelings of self confidence in him. Okay, जो आम पाखरे जो माने जो ऑटोमेटिकली आमर जदि गुड फिजिक थिबो then that good physical person must have a good self confidence ता पाखरे निश्चित भाबरे रहिबो. Then on other hand, a squint in the eye or snub nose, deafness, etc. may cause shyness. যদি আখিরে जो squeeze হৈ যাইতিবো কলা দাগ পড়ি যাইতিবো বা जो নাক তেড়া মেড়া থিবো এম যদি বিভিন্ন প্রকার जो physical deformities যদি রহিলা then automatically তা পাখরে কোন আসিবো না inferiority complex development হবো হি হবো. And a person with any or some of these defects finds it difficult to mix with others. It hampers the social development. आउ एई भलिया लोक जेहेतु तांको पाखरे गुड पर्सनालिटी नाही सो दैट दे शुड नॉट इजीली मिक्स्ड और एडजस्टेड इन द सोशल एनवायरनमेंट्स. सो सोशल डेवलपमेंट तांकर प्रॉपर होई परिबोनी बोली कुआ होछि. सिमिलरली एन अलाइंग और अनहेल्दी पर्सन्स इज मोर लाइकली टू रिएक्ट इमोशनली देन रेशनली. जो माने अनहेल्दी पर्सन्स ठीक अछि देखिबो से माने सडन रागी जाउथुबे माने तांको भितरे जो विभिन्न प्रकार डिफॉर्मिटीज नॉट ओनली फिजिकल ऑल्सो मेंटल डिफॉर्मिटीज भी स्टार्ट हो. फिजिकल डिफॉर्मिटीज जो थी ऑटोमेटिकल मेंटल डिफॉर्मिटीज बा मेंटल प्रोसेस रे तांकर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जोटा कि गुड पर्सनालिटी रो
आइडेंटिफिकेशन नुह दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल as such as to face adjustment problem तांका पाखरे adjustment problem देखा दबो ओके then the next part biological आमे दीटा पार्ट रे डिस्कशन करिया कथा कहितलु जे बायोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल तो बायोलॉजिकल सोशियो कल्चरल और कल्चरल मु ऐड करिक रखिछि ताकू भी आमे ठीक देखिदबा तो सोशियो कल्चरल डिटरमिनेंट्स तो सोशियो कल्चरल आमे बुझि परथु आम सोसाइटी और कल्चर रे जो जो फैक्टर्स अछंती सेही मानकर इफेक्ट रे आम पर्सनालिटी डेवलपमेंट केमिति होउछि देखिबा आमे द फर्स्ट वन पर्सनालिटी डेवलप्स एंड ब्लूम्स इन ए सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कारण आम आगु ऑलरेडी डिस्कशन करिसंती जे पर्सनालिटी डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटरी बा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट तो आमर जो हेरिडिटरी बेस रे हम फिजिकल कंडीशन बायोलॉजिकल प्रोसेस ई सब जिंस को आमे देखि सल्लु पढि सल्लु तो वर्तमान आमे देखिबा आमर एनवायरनमेंट रे कोन अछि आम सराउंडिंग रे कोन अछि so personality developed and blossoms in the socio-cultural environment. The socio-cultural environment consists of social codes and social norms. आमे जो society रहउछंती that society have some sorts of social codes and norms, rules, regulations, okay, and he has to adopt the code of conduct prescribed by the society and fashion himself according to the cultural pattern of that society. Various agencies are responsible for molding and developing his personality. So in our society we found different organizations or agencies are there which helps to individual to molding and developing his personality, own personality. The first organization or institutions that is called family, and it is the primary agency of development of personality of an individual. It is here that the child is initiated into a social setup. Okay, तो ये जो सोशल जो आमर जो सोसाइटी रो जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुए ये सोशल सेटअप रु ही स्टार्ट हुए जोटा कि आमर फर्स्ट सोशल सेटअप दैट इज आवर फैमिली द चाइल्ड स्पेंट द फर्स्ट 5 to 6 years exclusively in the family जनरली आमे घरे पिला माने से स्टेज रे रुहंती दिस पीरियड इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज ए चाइल्ड्स पर्सनालिटी डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस prevailing in the homes and the parent child relationship existing there तो ये जो पर्सनालिटी कहा ऊपर डिपेंड करिवो जो फैमिली कंडीशन ता सराउंडिंग रे ता फैमिली रे जो भले कंडीशन थिबो ऑटोमेटिकली ता पर्सनालिटी से हिसाब रे जो डेवलपमेंट करिवो जदि हम देखिबा माने मैक्सिमम केस रे हम रियलाइज करिबा जदि गुटे फैमिली रे फादर मदर बा अदर फैमिली मेंबर्स आर sober in nature then automatically we found that the child from that family or the child belongs to that family is also sober in nature तो ये जो concept टा family रू ही start up हुए आउ जो parent child relationship that also create a group by influence on the development of personality जदि आमे गार्डियन हिसाब रे बापा माँ हिसाब रे आमे पिला को डरेबा बहुत डरेबा ऑटोमेटिकली से पिलाटार पर्सनालिटी से डरुआ ही रही तो फ्रीडम दबा बा गोटे रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दबा कौन दबा ताकू जो आमे डिस्कशन करिबा पिलांग सहित आम जो मिसिबा कथा हबा ये सब कले ऑटोमेटिकली ता पाखरे गोटे ग्रेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट हे परियो बोली हम कहि परिया then the next agency that is school next to home school is another agency which is responsible for the development of the personality of the child it is in the school that child learns to adjust to large group of people okay जते बेले फैमिली रे थिबो सेते बेले से गुटे बाउंडेड जो एनवायरनमेंट भितरे आउ गोटे लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स सहित तार पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुए बट व्हेन दैट इंडिविजुअल कम टू द स्कूल फॉर देयर एजुकेशन एट दैट टाइम ही फाउंड ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और पियर्स आर देयर इन द स्कूल आउ जो जगह रे कि सेही जगह रे तार गोटे लार्ज स्केल रे केमिति से एडजस्ट हे परिबो सेही अनुसार तार पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुए ए गुड स्कूल बिसाइड्स डेवलपिंग द चाइल्ड सोशली इमोशनली एजुकेशनली एंड मेंटली जदि हम गुड स्कूल गोटे देखिबा भलो स्कूलटे ऑटोमेटिकली से जगह जो पिला पढुतबे तांकर सोशली डेवलपमेंट भी भलो होबो इमोशनल डेवलपमेंट भी भलो होबो एजुकेशनली आ मेंटली डेवलपमेंट भी ठीक भाव रे हे परिबो ओके एंड ब्रॉडर आउटलुक ऑफ द लाइफ आ भलो स्कूल जदि पढिबा तार आउटलुक भी ब्रॉडर रहिबो आ सी माने जो फ्यूचर तार फ्यूचर रे से केमिति पर्सनालिटी रो जो पर्सनालिटी शो अप करबो सेटा भी ए जगह ही तैयारी ही आस परिबो
And if school provides a rich balanced curriculum, it provides rich balanced curriculum, okay, it provides adequate recreational facilities, and if there is competent supervision, these feelings influence the personality of the individual in a positive way and vice versa. Jodi problem rahila negative hobo, okay. The next one is the neighborhood, सराउंडिंग आम सराउंडिंग रे जो आम सोसाइटी रे जो सराउंडिंग आम सराउंडिंग रे जो लोक माने अछंती जो माने आम नाइबर बोली कहंती पड़ोसी तांकर इन्फ्लुएंस रे भी आमर पर्सनालिटी डेवलपमेंट किछि मात्रा रे हुए. Neighborhood also cast a great influence on the individual's personality. The child interact with the members of the neighborhood, the values that cherish, the attitude they possess, the type of education they receive, the educational institutions they attend, and the type of occupation they engage in, all these things directly or indirectly affect the personality of the individual. Okay, because neighborhood रो influence टा आम उपरे बहुत मात्रा रुहे, बुझिले कि नहीं, कारण एज ए सोशल एनिमल वी लिव फॉर आवर सोसाइटी. सो द इंपोर्टेंस ऑफ सोसाइटी केतेबेले रहिबो जेतेबेले आमे निजको आम सोसाइटी रे सेही हिसाब रे आमे रिप्रेजेंट करिवा. सोसाइटी रिप्रेजेंट कले माने कोन ना अदर इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी रो तांको आगे रिप्रेजेंट करिवा. तो एई जो कांसेप्ट रे आम सोसाइटी रो विभिन्न प्रकार चेंजेस आसे आउ आमे गोटे गुड पर्सनालिटी बा बैड पर्सनालिटी रो जो आम पाखे कंडीशन टा रुहे. Then the last one, last determinant, that is cultural determinants. Here, cultural determinants the nature and the form of interpersonal relations, person to person, okay, attitudes, behavior of the members of the particular society. तो गोटे पर्टिकुलर सोसाइटी जो कल्चर रो जो डिटरमिनेंट्स अछंती, कल्चर जो जो कथा को नै कि हेछि आम इंटरपर्सनल रिलेशन को नै कि हेछि, आमर एटीट्यूड को नै कि हेछि, आमर बिलीव्स को नै कि अछि बा आम बिहेवियर को नै कि अछि, ए सब जिंस को जदि आमे देखिबा, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनालिटी. The way of the child is handled in the family is also depend on the culture, okay. जो कल्चर फैमिली थिबे सेही हिसाब रे से पिला को डेवलप बढ़ांती, तांकर ग्रोथ और डेवलपमेंट सेही कल्चर को नै कि ही होबो. Since the cultural value changes from society to society, the personality of different individuals brought up in different society differ from one another. हमरो जो भलिया सोसाइटी रे हम रहउछन, जनरली हम इंडियन सोसाइटी कथा कहबा, तो इंडियन सोसाइटी जो माने अछंती तांकर जो एटीट्यूड टा अदर सोसाइटी बा अदर नेशनल सोसाइटी डिफरेंट हुए. तो आमे देखिबा आम पर्सनालिटी टा जोटा रहिबो, आमे काइंड हार्टेड रहंती, आम भितर क्रुएलिटी न थाए, आम भितर नॉन वायलेंस थाए, एई भले विभिन्न प्रकार गुड क्वालिटीज वी फाउंड इन आवर individuals, those who are live in our country, because आम सोसाइटी आम कल्चर से सब जिंस सिखाए और से सब जिंस कराए. तो ऑटोमेटिकली कल्चर रो इंपैक्ट आम जो इंडिविजुअल कर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रे रहिबो, ओके. सो दीज आर ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, मीनिंग, नेचर एंड डिटरमिनेंट्स. सो आगु को आमे जो एई यूनिट रो ए रिसेंट भितरे मु कोन करिवि ना, ए यूनिट रो थ्योरी उडा जो ट्रेट आउ ट्रेट कम जो साइकोएनालिटिक अप्रोच जो सब अच्छी, तो से सब थ्योरी गुडा को आम डिस्कसन करवा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आउ एंट्रांस प्रोस्पेक्ट रे भी, ओके. थैंक यू.